starting the USMLE series from first aid. Today we will be discussing cell injury and this lecture will be in bilingual languages. This lecture will be bilingual means I will be discussing this topic in both English and Hindi languages. Starting from cell injury is of two types, reversible and irreversible cell injury. In reversible cell injury, first there is decrease in the ATP and decrease in the activity of calcium and sodium potassium ATPase pump. This leads to cellular swelling in the cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum or Golgi. Cellular swelling is the earliest morphological manifestation in reversible cell injury. Next, ribosomal or polysomal detachment, which leads to decrease in the protein synthesis. Plasma membrane changes, which is blebbing. Nuclear changes, which is chromatin clumping. And rapid loss of function. For example, the myocardial cells, which are the cells present in the muscle of the heart, become non-contractile after 1 to 2 minutes of ischemia. Next is the myelin figures. Myelin figures are the peroxidized lipids that get aggregated. So basically, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जब जो ATP है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी डिक्रीज होती है. इसके बाद सेलुलर स्वेलिंग आती है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी में. ये अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का. उसके बाद राइबोसोमल या पॉलीसोमल डिटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चेंज होते हैं, ब्लेबिंग, और न्यूक्लियस में क्रोमैटिन के क्लम्प्स बनने लगते हैं. रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मायोकार्डियल सेल्स, जो कि 1 से 2 मिनट ऑफ इश्कीमिया की वजह से नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, और लिपिड्स का पर ऑक्सीडेशन के बाद जब वो एग्रीगेट करते हैं तो वो माइलिन फिगर्स बनाते हैं. इस डायग्राम में इफ वी सी द फर्स्ट चेंज इज द सेलुलर स्वेलिंग and after that there is the ribosomal detachment here from the endoplasmic reticulum, which leads to decrease in the protein synthesis. Next is the irreversible cell injury. In irreversible cell injury, there is breakdown of plasma membrane, which leads to the cytosolic enzymes to leak out of the cell. For example, troponin. Whereas there is influx of calcium inside the cell, and this leads to activation of degradative enzymes. There will be mitochondrial damage or dysfunction, which leads to loss of electron transport chain and subsequently decreased ATP. In the lysosomes, there will be rupture that will lead to autolysis. Following that, there will be nuclear degradation. For example, pycnosis, karyorrhexis, and karyolysis. In pycnosis, the nucleus becomes condensed. And in karyorrhexis, there is nuclear fragmentation that is caused because of endonuclease mediated cleavage. In karyolysis, there is dissolution of nucleus in the cell. In the mitochondria, there will be amorphous densities, also known as inclusions. So, in short, if we discuss about irreversible injury, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने लगती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स थे जैसे कि ट्रोपोनिन वो सेल के बाहर आ जाते हैं और कैल्शियम सेल के अंदर आ जाता है.
इसकी वजह से जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं सेल को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज या डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से ईटीसी चेन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लॉस होता है और एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाता है। लाइसोसोम्स में रप्चर होता है, और क्योंकि ये रप्चर होता है लाइसोसोम्स में जिसके अंदर डाइजेस्टिव या डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ये सेल के अंदर आने के बाद सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। न्यूक्लियस में डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहला पिकनोसिस जो कि न्यूक्लियस का कंडेंसेशन है। उसके बाद कैरियोरेक्सिस जो कि न्यूक्लियस का फ्रैगमेंटेशन होता है। ये क्लीवेज होता है न्यूक्लियस का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से। उसके बाद कैरियोलाइसिस आता है जो कि न्यूक्लियस का डिसोल्यूशन होता है सेल के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो परमिएबल होने लगती हैं जिसकी वजह से सेल के जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो डीनेचर होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने लगते हैं, और इसको हम बोलते हैं amorphous density या फिर inclusions. Like we can see here, there is visible breakdown of this plasma membrane. There is increased permeability through the mitochondrial membrane, and in the nucleus we see nuclear degradation, which is pycnosis, which is the condensation of nucleus, karyorrhexis, which is the fragmentation of nucleus, and karyolysis, which is the dissolution of nucleus inside the cell. इसके बाद लाइसोसोम्स में रप्चर होता है, और इस रप्चर की वजह से सेल का ऑटोलाइसिस होने लगता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद द सेल लुक्स लाइक दिस। देयर इज फ्रैगमेंटेड न्यूक्लियस which is dissolving inside the cell and also nuclear condensation. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई थी जिसकी वजह से उनके अंदर एमॉर्फस डेंसिटीज थी, और लाइसोसोम्स रप्चर हुए और उनके बाद उन्होंने ऑटोलाइसिस करा। एंड ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन दिख रही है।